Welcome everyone. Today we will discuss Piaget's theory of cognitive development. So first of all, what does the word cognitive means? Cognitive is related to person's consciousness of his mind which makes him active. So consciousness means that awareness of his mind and which makes him active. As we know that the period of childhood is an active phase where the child learns through active participation in all the activities instead of passiveness. So a child in its initials is in active phase of learning. और कॉग्निशन का ये भी अर्थ होता है जैसे कि हमारी बौद्धिक क्षमता कि कैसे हम उस चीज़ को याद करते हैं या उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई नक्शा दिखाया गया, जैसे कि भारत का नक्शा हमने देखा और अगर हम चीज़ें उसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको समझने की, उसको याद करने की। कॉग्निशन इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ लाइक रीजनिंग एंड थिंकिंग। तो कॉग्निशन में एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं जैसे कि रीजनिंग, किसी चीज़ के ऊपर तर्क कर पाना या उस पर सोच पाना। Piaget observed the intellectual abilities of children and adolescents, finding that children think in a different way from adults. So Piaget observed, he made distinctions between while carrying the experiment. He observed the distinction between the thinking abilities of children and adolescents and their intellectual abilities, and find that the children thinks in a different way from the adults. The three components of Piaget's theory are as follows. तो उन्होंने 3 कंपोनेंट्स दिए थे अपनी थ्योरी में, जो कि इस तरह से हैं। फर्स्ट इज स्कीमास। सो अ स्कीमा इज अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर। स्कीमा एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, एक सिस्टमाइज्ड पैटर्न है थॉट का और बिहेवियर का। फॉर एग्जाम्पल, while solving a problem or puzzle involving logical reasoning, a child will organize its knowledge and past experience. तो अगर एक चाइल्ड प्रॉब्लम या फिर कोई पजल सॉल्व कर रहा होगा और उस समय जो उसे नॉलेज जिस तरह से वो अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो उसने पहले सीखा होगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस में, मतलब पिछली क्लास में उसने पढ़ा होगा, और उसको वो ऑर्गेनाइज करेगा, या जो उसने सीखा होगा उसको वो ऑर्गेनाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, और इसी को हम स्कीमा कहते हैं। द आइडियाज दैट ऑकर टू चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर नोन एज स्कीमा। फॉर एग्जाम्पल, so this is a question which is 4 9 25 x 121. So while solving this, a child will organize its thinking ability and the practice of reasoning which he studied in class, and finally make the conclusion that the pattern follows over here is the square of prime numbers, which is 4. For example, 4 is a square of 2 which is a prime number, 9 is a square of 3 which is a prime number, 25 is a square of 5 which is a prime number, and next will come 49 which is a square of 7, and 7 is also a prime number. And the pattern he will think while solving this problem would be known as schema. So Piaget defined schema as a cohesive, repeatable action sequence possessing component actions that are tightly interconnected and governed by a core meaning. So Piaget defined schema as a cohesive. Cohesive means which sticks around or have a strong impact, like adhesive.
अ, तो पियागेट ने स्कीमा को डिफाइन किया कि वो एक कोहेसिव, जो कि एक ज़्यादा समय तक स्टिक करने वाला और रिपीटेबल एक्शन सीक्वेंस है, जो मतलब ज़्यादा समय तक चाइल्ड उसे ग्रास्प करके रखता है अपने लाइफ लॉन्ग, जो कि पजेस करता है कंपोनेंट एक्शंस दैट आर टाइटली इंटरकनेक्टेड एंड गवर्न्ड बाय अ कोर मीनिंग। और उसका एक सेंट्रल मीनिंग होता है, एक कोर सिद्धांत होता है, जो एक्शंस वो पजेस करता है उसका एक कोर मीनिंग होता है। He said that a schema helps the child to understand any situation and respond to it. So, schema helps the child to understand any kind of situation, and the child immediately respond to it. Or we can also define schema as the uh, previously settled or organized or learned components which sticks in the mind of child, and the actions are tightly connected and governed by a core meaning. Second one is stages of adaptation. So adaptation is a process of getting familiarized with the world. The stages of adaptations are the stages of intellectual development. So adaptation के जो stages है वो intellectual development के stages हैं, मतलब कि एक इस तरह से development जो कि बौद्धिक क्षमता से संबंधित है, which occurs due to the adaptation process, जो कि adaptation process के through होता है. These are as follows. So first one is assimilation. This means absorbing something into the present schemas. So assimilation का मतलब होता है कि जो present schemas जो हैं हमारे, उनमें नई नई information को absorb करना. Second one is accommodation. So, accommodation means changing the way of thinking and actions for managing objects. So while solving a reasoning or a problem, for example, this problem, a child will think all the ways after hit and try method, and if one method won't work, the child will move on to the second method. So the method of the child to change the present action is known as accommodation. And he will consequently change the thinking and actions for managing objects. Third one is equilibration or disequilibration. So equilibration takes place when a child's schemas can deal successfully with the present information given through assimilation. Equilibration वो process है जिसमें child की जो schemas है वो डील कर पाते हैं सक्सेसफुली जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन उसे दी गई है एसिमुलेशन के थ्रू. दिस प्रोवाइड्स मोटिवेशन फॉर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट. और ये चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए एक सकारात्मक पॉइंट है. यानी कि इक्विलिब्रेशन तब प्लेस करता है जब चाइल्ड के स्कीमास डील कर पाते हैं सक्सेसफुली जो उसे इंफॉर्मेशन दी जाती है और वो उसको एब्जॉर्ब कर पाता है और उसको वो अपने जो स्कीम जो उसके प्रीवियसली ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स है उस पर वो सक्सेसफुली उसको एडॉप्ट कर पाता है. दिस प्रोवाइड्स मोटिवेशन फॉर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट और ये चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए एक सकारात्मक पहलू है. However, a disequilibration occurs if new information cannot be dealt successfully. लेकिन डिसइक्विलिब्रेशन तब ऑकर करता है जब इंफॉर्मेशन वो नहीं सक्सेसफुली डील कर पाता है जो उसके पहले से चलते आ रहे स्कीमाज है, जो पहले से चलती आ रही उसकी इंफॉर्मेशन है और जो पैटर्न है ऑफ थिंकिंग, जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, उसमें जब वो नई इंफॉर्मेशन को नई सक्सेसफुली डील कर पाता है. सच ए सिचुएशन विल कॉज डिसइक्विलिब्रियम.
So such situation will cause disequilibrium. Stages of development. Third point is stages of development. Piaget suggested that the children understand the world around them by adjusting their ideas when they find differences between what they know and what they discover. This means cognitive development of child takes place before than learning things. सो पियागेट ने सजेस्ट किया कि जो बच्चे हैं वो अपने जो आसपास जो उनके वर्ल्ड में हो रहा है वो उसको एडजस्ट करते हैं बिटवीन व्हाट दे नो एंड व्हाट दे वांट टू डिस्कवर, जो उनकी मतलब कि जो उनको जानना है अभी और जो वो पहले से जानते हैं. दिस मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड टेक्स प्लेस बिफोर देन लर्निंग थिंग्स. और लर्निंग जब वो चीज़ें याद करने लगते हैं, समझने लगते हैं, उससे पहले उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका होता है. जब वो चीज़ों को याद करने लगते हैं उससे पहले उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो पहले ही डेवलप हो चुकी होती है. ही स्टेटेड दैट द चाइल्ड गो थ्रू द फॉलोइंग 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. और उन्होंने ये स्टेट किया कि जो चाइल्ड है वो 4 तरह की स्टेज जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है उससे गुजरता है. फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से 2 ईयर्स तक की टाइम पीरियड तक चलती है. इन्फेंट्स एंड टोटलर्स एक्वायर नॉलेज थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो जो इन्फेंट्स जो कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो जो नॉलेज है, क्योंकि उनकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती है, इस वजह से वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस और मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही वो मतलब उनका जो थिंकिंग प्रोसेस बन पाता है. At this point of development, a child's intelligence consists of basic motor due to movement and sensory through senses such as eyes, ears, mouth, nose and touch. तो इसमें उनके सेंस ऑर्गन्स है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं. सेंस ऑर्गन्स जैसे आइज, ईयर्स, माउथ, नोज एंड टच, इसके थ्रू वो जो चीज़ें को परसीव कर पाते हैं. एंड ड्यू टू उनके मतलब मूवमेंट से बेसिक मूवमेंट जो भी होता है उनके थ्रू वो डेवलप कर पाते हैं, मतलब परसेप्शन, और वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाते हैं. Piaget said that developing that objects continue to exist even when they cannot be seen was an important element at this point of development of a child. So, Piaget suggested that developing that the particular object, for example, a ball, exists even when they cannot be seen, was a basic most important element at this point of development of child. By learning that objects are separate and distinct entities and that they have existence of their own outside of individual perception. जब बच्चों को जब बच्चों को ये समझ में आ, जब वो इन्फेंट से लेकर 2 इयर्स तक की एज पीरियड में जब उन्हें ये समझ में आने लगा कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जब वो नहीं दिख रहे हैं, जब वो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को जान पाए कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ हैं और उनका एक अपनी आइडेंटिटी है. एक इंडिविजुअल परसेप्शन के अलावा उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है. Children are then able to begin to attach names and words to the objects. So उसके बाद चिल्ड्रन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसकी शेप के आकार पर या फिर उसको पॉपुलरली जो लोग बुला रहे हैं उसके आधार पर उन पर एक नेम अटैच करते हैं और या फिर उनको एक किसी पर्टिकुलर वर्ड से बुलाने लगता है. उनको एक उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगता है और उसका ये भी पता लगता है कि उसका एक अपना एग्जिस्टेंस है आउटसाइड इंडिविजुअल्स. एक
पर्टिकुलर इंडिविजुअल के परसेप्शन के अलावा अलावा भी उसका एक अपना एग्जिस्टेंस है, और तब उसके बाद वो उन चीज़ों को नाम देने लग जाते हैं। सेकेंड वन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर 7 ईयर्स तक चलती है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्री टेंस एंड प्ले बट आर स्टिल नॉट लॉजिकल थिंकर्स। तो जो बच्चे हैं वो लर्न प्ले वे मेथड के थ्रू और प्रीटेंस यानी कि डिसेप्शन, जैसे कि छोटे बच्चों को जो है वो मतलब उनके पेरेंट्स या फिर जो भी उनके गार्जियन है वो एक फॉल्स फॉल्स चीज़ें, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग फॉल्स, हम उसे पर्टिकुलरली फॉल्स नहीं बोल सकते, मतलब उनको लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर उसको एक तोड़ मरोड़ के एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम प्रिटेंस बोलें, इस पे प्रिटेंस बोलेंगे, और जो कि उनको बाद में समझ में आता है कि एक्चुअली वो चीज़ नहीं है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्रीटेंस एंड प्ले बट आर स्टिल नॉट लॉजिकल थिंकर्स। इस 2 से 7 एज पीरियड में जब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, वो अब लेकिन वो लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं, तर्क सहित नहीं सोच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एडल्ट माइट टेक अ लंप ऑफ क्ले एंड डिवाइड इट इंटू 2 equal parts with different shapes and then give a child at this stage of cognitive development a choice between which piece to play with. इसमें जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि इसमें एक अडल्ट ने एक लंप लिया है क्ले का, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को उसने 2 इक्वल पार्ट में और 2 डिफरेंट शेप में डिवाइड किया है, और इस स्टेज पे वो इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज में वो चाइल्ड को चॉइस देता है कि वो किसके साथ खेलना चाहेगा। द अडल्ट हैज़ रोल्ड 1 piece ऑफ क्ले इनटू अ कॉम्पैक्ट बॉल। तो एक लंप ऑफ क्ले, एक जो पीस है क्ले का, उसको उसने बॉल की तरह रोल कर दिया है और दूसरे वाले को फ्लैटन कर दिया है इनटू द शेप ऑफ चपाती। और क्योंकि चपाती की जो शेप है वो बड़ी लगती है बॉल की शेप से, क्योंकि बॉल की शेप कॉम्पैक्ट लगेगी, द चाइल्ड विल मोस्ट लाइकली विल चूज द चपाती शेप। तो वो चपाती वाली जो शेप है क्योंकि वो बड़ी लगेगी इसलिए वो उसको चूज करेगा। सिंस द चपाती शेप्स लुक बिगर, द चाइल्ड विल मोस्ट लाइकली चूज द शेप इवन दो द 2 pieces आर एग्जैक्टली द सेम साइज। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन रिमेंबर ऑब्जेक्ट्स एंड हैपनिंग्स and their thinking becomes more imaginative and centered on themselves. So in this stage, the children remember objects and happenings, and their thinkings are more imaginative and uh, like on the stories, and mostly they are centered on themselves, which means they are not concerned with reality, they are just concerned on themselves or imaginative things. Concepts formed are crude, which means concepts which are formed are very basic but not easily changed afterwards, but it remains lifelong. Their vocabulary increases from about 200 words at 2 years to about 2000 words at 7 years. So इनके जो vocabulary है वो जो वर्ड्स बोल पाते हैं वो 200 वर्ड से 2000 वर्ड्स तक की रेंज तक पहुंच जाते हैं जब वो 7 साल की एज में पहुंचते हैं। दे ऑल्सो बिलीव दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक डॉल्स एंड टॉयज हैव इमोशन एंड फीलिंग्स। तो वो समझने लगते हैं कि डॉल्स एंड टॉयज भी हमारी तरह ही हैं, उनमें भी इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं। थर्ड स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 ईयर्स तक की रेंज में होती है। Children begin to think more logically, but their thinking may be very rigid. So their thinking is very fixed, but they start thinking logically. They tend to struggle with abstract and hypothetical concepts. So what are abstract concepts? Abstract concepts are those concepts which are based on just theoretical way, which means they don't provide a clear picture. They have very abstract form, which means in the form of um, definitions or problems, just like we solve in mathematics, which are based on
thinking, but not just like social sciences or sciences where social sciences or sciences where we learn through many aids like diagrams, so that they can provide us a clear picture about certain things. And hypothetical concept, which means the concept, जो hypothetical concept होते हैं, मतलब कि अगर एक condition के आधार पर होते हैं कि अगर ऐसा हो तो at this point children also get less centered on themselves and begin to think that how other people might think and feel. So at this stage, the previous stage, when the children are centered on themselves and imaginative things, now the stage changes and they start thinking uh, that how other people might think and feel, the feelings of other people. They also begin to think that their thoughts are unique to them and that other needs to share their feelings. Now they begin to think that their thoughts are unique, which means they are different and others thought may vary from their thoughts. And they need to share their feelings and thoughts and opinions with others. They start solving mathematical problems by using, for instance, building blocks and their fingers. So now they start solving mathematical problems as well, by using, for instance, building blocks or abacus, or using fingers. So uh, and other kits for mathematics, which we use in very basic stage, like in play groups, etc. They solve visual problems better than verbal ones. So they are able to solve visual problems which they can see, rather than the problems which are in written form. Imagination of the previous stage is replaced with the actual facts. So in the previous stage, they used to imagine things which are not in real, and now the previous stage is replaced with actual facts, with the real things, like the real things which happen. Experimentation for learning of the previous stage is replaced by wanting to use rules for learning. So the experimentation of learning, the previous stage was based on the experiment of learning. It was not a stage of learning, but now the stage is replaced by wanting to use rules of learning. The fourth stage is formal operational stage, which is from 11 to 15 years and above. So this is the final stage involves an increase in logic. Now the logic is increased in the child, and the ability to use deductive reasoning. डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जैसे कि जिसमें जैसे इंडक्टिव रीजनिंग होती है जो कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम सीखते हैं. डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जो कि हम डेफिनेशंस और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू हम सीखते हैं, उसमें एग्जाम्पल्स का कोई रोल नहीं होता. Deductive, like passive learning, reasoning and an understanding of abstract ideas. So now they start beginning to understand abstract concepts as well. At this point, the children are capable of seeing more than one potential solution to same problem. So the कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस और ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, वो इस एज पे बच्चे यूज़ करना शुरू कर देते हैं. एंड थिंक मोर साइंटिफिकली एंड लॉजिकली. सो साइंटिफिक टेम्परामेंट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस stage, and they started thinking logically about the world around them. They can do mathematical calculation and think creatively. So now they can do mathematical calculations and think creatively, which means the uniqueness is built in them, that how to present particular things and how to add uniqueness to their work. And they start introspecting, that is examining their own thoughts and feelings. So now they begin to examine their own thoughts and feelings,
and think about their roles in the society. So now they start thinking in a more mature way, where they start थिंकिंग अबाउट देयर रोल इन द सोसाइटी. वो अपने कर्तव्यों को और अपने मूल्यों को, क्योंकि उन्होंने उनका इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका होता है कि वो अब अपने कर्तव्यों को और अपने मतलब अपनी रोल को सोसाइटी में वो पहचान पाते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं कि उन्हें किस तरह से उस पर काम करना चाहिए. Piaget considered that children's intellectual development is a process in which they do not just add additional or more information and knowledge to their existing knowledge. So Piaget ने ये consider किया कि जो children का intellectual development है उसमें वो सिर्फ एडिशनल या फिर ज़्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं ऐड करते अपने प्रीवियस नॉलेज में as they get older, but that there is a qualitative change in how children think. So there is a qualitative change, the change in quality of how children think as they gradually progress through these four stages. So there is a qualitative change, which means a change in quality of perception or thinking as they progress gradually through these four stages, through these four divided periods. Thus, a child at the age of 7 doesn't have more information about the world than he did at the age of 2. So, there is also a fundamental change in how he thinks about the world. So at the age of 7 he doesn't just have additional information than he did at the age of 2, but there is also a fundamental, there is a basic qualitative change in how he thinks about the world. That's it.